Assalamu alaikum. This is Muhammad Yusuf. The topic of my presentation is impact factor, H index, and I10 index, which is submitted to Dr. Muhammad Zaimul Haq Bhatti. The content of my presentations are given over here. First of all, I will discuss some basic concepts, then introduction of H index, impact factors, and I10 index, motivations and history. Then I will discuss how to find impact factors, H index, and I10 index. At the end of my presentation, I will conclude the benefits and disadvantages of H index, impact factors, and I10 index. First of all, I am going to discuss the difference between search and research. Search is a process of finding information regarding a certain topic which is already provided. For example, recently I published my research papers in physics of the dark universe with title of self-gravitating anisotropic fluid in FRT gravity. This is published article. Now I can find this article on the Google by actually search means to look for something. For example, I lost my book, so I am searching for it right now. What is research? Research is a process of investigation and study of previous finding to establish facts and achieve new conclusions. I will record the previous example and then connect the searching process and research process. For my publications, I specially studied the Sharif and Bhatti's work on stability of self-gravitating anisotropic fluid in collapse scenario in the background of general relativity. After this literature review and studies of previous knowledge, I established some modified results in modified gravity theories. This is a process of research. As far as theoretical research is concerned, theoretical research often have multiple definitions and theoretical terms. The terms in which involves in theoretical research works, they clearly define what we means by each terms. Theoretical researchers develops modified models to explain the complex interactions between different physical quantities by putting some physical constraints under the certain conditions. Experimental research is actually evaluation of theoretical work. Experimental researchers conduct tests on a physical phenomena using tools like lasers, by using some tools like lasers, different machines, telescopes, etc., to arrive at answers. As far as experimental research is concerned in our country, yes, few of institutes are working experimental research, in which most probably most famous is Sparko. Characteristics of research work. First of all, we have to define the basic problems. We have to define the problem. First of all, we have to define the problems, then investigations, then we have to investigate and study the previous findings and results, which is called literature review. After this, we have to clarify our problem, then collect the data about this problem, finally analyze this data and revise facts and theories. When we complete this process of research, then we have a findings in our hand. And this findings is actually article is a piece of writing in different publications, newspapers or magazines, etc. Articles. What is difference between journal articles and research articles? Any articles that is published in journal is a journal article, is known as journal articles. Journals publish different types of articles, in which some articles based on original research and some are based on opinion based articles. Research articles. A research articles refers to those articles that requires original research. Now we are going to understand what is journal. A journal is a collection of articles like a magazine that is published regularly throughout the year. Journal is actually medium through which the scholars present their most recent research work.
There are some types of journals. Number one, academic journals or scholarly journals. Trade journals. Number two, trade journals. Number three, current affair or opinion journals. Popular magazine or different newspapers. What is citation? Citation is a reference to the source of information used in our research. Actually, citation is a way of giving credit to individuals for their creative and intellectual work. It means citations का मतलब ये हुआ कि citations का मतलब ये है कि कोई रिसर्चर्स किसी दूसरे रिसर्चर्स का आर्टिकल्स को पढ़ता है, अगर उसको कोई उस रिसर्च पेपर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको अपने रिसर्च वर्क में रेफरेंस के तौर पर कोट करता है। अगर वो अपने रिसर्च वर्क में या अपने रिसर्च आर्टिकल्स में किसी दूसरे रिसर्चर्स का रिसर्च पेपर रेफरेंस के तौर पर कोट करता है तो इसका मतलब है उसने उसको साइट किया है अपने रिसर्च पेपर में। कुछ साइटेशंस दो तरह की होती हैं। एक ईयरली साइटेशंस होती है और दूसरी होती है लाइफ टाइम साइटेशंस। इसी तरह किसी एक पेपर की साइटेशंस भी देखी जा सकती है कि एक पेपर एक एक साल में कितनी बार साइट हुआ है और उसकी लाइफ टाइम साइटेशंस भी देखी जा सकती हैं। किसी रिसर्चर्स की लाइफ टाइम साइटेशंस भी देखी जा सकती हैं। उसके जितने पेपर्स पब्लिकेशंस हैं उनकी लाइफ टाइम साइटेशंस देखी जा सकती हैं। ईयरली भी साइटेशंस देखी जा सकती हैं। मैं आपको ये दिखाने के लिए गूगल स्कॉलर पे ले जाता हूँ। सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर पे चले जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे हम जिस आर्टिकल्स को जिस आर्टिकल की साइटेशंस देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाके गूगल स्कॉलर्स लिखेंगे। गूगल स्कॉलर पे जब हम अपने पेपर को जिस पेपर की आप साइटेशन चेक करना चाहते हैं उसका टाइटल टाइप करेंगे। उसके बाद आपके पास मैंने ये गूगल स्कॉलर पे जाके अपना जो मेरा पब्लिश्ड पेपर है उसको उसके टाइटल को स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ ग्रेविटेटिंग एनिसोट्रोपिक फ्लूइड मैंने टाइप किया तो मेरे पास पूरी उसकी डिटेल आ गया, पेपर ओपन हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी साइटेशंस कितनी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साइटेड बाय 828। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस आर्टिकल को 28 रिसर्चर्स ने अपने रेफरेंस के तौर पर कोट किया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस ने मेरे पेपर को अपने रिसर्च आर्टिकल्स में रेफरेंस के तौर पर कोट किया यानी साइट किया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। साइटेड बाय पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो मेरे पास ये सारे के सारे जिस जिस रिसर्चर्स ने मेरे पेपर को साइट किया है उनमें सबसे पहले नंबर पे है डॉक्टर यूसुफ और उसके बाद ये पी के साहू है, हरारे अटल है। इन्होंने अपने पेपर्स में इस पेपर को साइट किया हुआ है। अगर आप किसी रिसर्चर की साइटेशन देखना चाहते हैं उसके आर्टिकल्स की साइटेशन देखना चाहते हैं तो हम जस्ट जस्ट राइट डाउन करेंगे। गूगल पे जाके उस रिसर्चर का नाम आपने राइट डाउन करना है और जो ही आप उसका नाम राइट डाउन करेंगे मैंने डॉक्टर जईमुल हक भट्टी इज अ यंग रिसर्चर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड जनरल रिलेटिविटी। मैं डॉक्टर मोहम्मद जईमुल हक भट्टी साहब के आर्टिकल की साइटेशन देखना चाहता हूँ तो मैं जस्ट गूगल पे जाके जईमुल हक भट्टी गूगल स्कॉलर लिखूंगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद जईमुल हक भट्टी। इसका सबसे ज़्यादा जो साइट हुआ है पेपर कॉजेस ऑफ इरेगुलर एनर्जी डेंसिटी इन एफ आर टी ग्रेविटी। ये पेपर 138 टाइम साइट हुआ है और ये पब्लिश हुआ था 2016। दिस इज द ईयर व्हेन योर आर्टिकल इज पब्लिश्ड। ये 2016 2016 में ये पब्लिश हुआ था। इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने 138 मरतबा रेफरेंस के तौर पर कोट किया है यानी साइट किया। इसी तरह ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं इनकी ये साइटेशंस दी हुई है। ये टोटल साइटेशंस हैं, ईयरली साइटेशंस नहीं है किसी आर्टिकल की। अगर हम देखना चाहते हैं कि इस रिसर्चर्स की ये मींस ये डॉक्टर मोहम्मद जईमुल हक भट्टी की ईयरली साइटेशंस क्या है, और यहाँ पे एक ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। इस ग्राफ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ईयरली इसकी साइटेशंस मिल जाएंगे। इनकी 2014 के अंदर साइटेशंस जो साइटेशंस हुई 153
इसी तरह 2015 के अंदर 2014 के अंदर इस इनकी जो साइटेशंस हैं, इनकी जो साइटेशंस है 2015 14 के अंदर 153 है, 2015 के अंदर 139 है, और सिमिलरली ये बढ़ती जा रही हैं। और इन 2020 में सबसे ज़्यादा साइटेशंस हैं, और वो है यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो साथ में लिख के आ जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया बॉक्स के अंदर 549 फाइव 541 साइटेशंस हैं 2020 के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा साइटेशन इनकी किसी एक साल में सबसे ज़्यादा साइटेशन जो है 541। अभी 2021 स्टार्ट हुआ है तो इनके 80 साइटेशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पेपर्स को 80 रिसर्चर्स ने अपने डिफरेंट आर्टिकल्स में साइट किया है, रेफरेंस के तौर पर कोट हुए। अब मैं आपको डॉक्टर जिशान यूसुफ की प्रोफाइल दिखाता हूँ। जी यूसुफ गूगल स्कॉलर लिखूंगा तो मेरे सामने उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये उसी टाइटल के नाम से पेपर है, कॉज ऑफ इरेगुलर एनर्जी डेंसिटी इन एफआरटी ग्रेविटी। और इनकी भी साइटेशन जो है वो 138 साइटेशन, और ये पेपर 2016 के अंदर ही पब्लिश हुआ है। तो इनकी जो साइटेशन हैं, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन हैं वो 2615 साइटेशन हैं टोटल साइटेशन। और अगर हम ईयरली साइटेशंस देखें तो इनकी भी ईयरली साइटेशंस अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास ग्राफ है इसके ऊपर 2014 के अंदर इनकी साइटेशन टोटल नंबर ऑफ साइटेशन जो है वो 149 है, और इसी तरह ये बढ़ती जा रही है। और 2020 में इनके जो सबसे ज़्यादा साइटेशन हुई है, इनके आर्टिकल्स को सबसे ज़्यादा साइट किया गया है, और वो 660 टाइम्स इनके आर्टिकल्स को साइट किया गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशंस व्हिच इज इम्पैक्ट फैक्टर। What is impact factor? Impact factor reflects a yearly average number of citations that article published in the last 2 years in a given journals received. Impact factor generally the higher impact factors are often deemed to be more important more important in their respective fields than that of the lower impact factor. History of impact factor. Now, what is the history of impact factor? Impact factor was devised by i10 Gottfried, the founder of Institute of Scientific Informations (ISI). ISI not standing for Intelligence Agency of Pakistan. It is it is Institute for Scientific Informations related. Our impact factor calculated yearly started from 1975. For the journal listed in the Journal Citations Report means GCR. इम्पैक्ट फैक्टर हम 2 years का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम 5 years का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह इम्पैक्ट फैक्टर का 5 years का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। Here I am going to show you the general formula for impact factors to calculate the impact factor for the years Y. For the year Y. Here I am going to show you the formula for impact factor. Impact factor for the year 2000 for the year Y. Impact factor. अगर हम किसी भी जनरल का 2019 के लिए जनरल 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर जानना चाहते हैं तो हमें 2018 और 2017 के अंदर कितनी पब्लिकेशंस हुई और उनकी साइटेशंस को जानना, उनकी साइटेशंस का मालूम होना जरूरी है। 2018 और 2017 की साइटेशंस को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2018 में जितनी 2018 और 17 के अंदर जितनी पब्लिकेशंस हुई हैं उस पर। अगर हम 5 years की इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का 5 years का इम्पैक्ट फैक्टर जानना चाहते हैं तो जस्ट हमें जिस साल का हमने इम्पैक्ट फैक्टर जानना है उससे पिछले 5 साल उसकी साइटेशंस और साइटेशंस का सम करना है और उससे डिवाइड कर देना है उससे उन्हीं 5 सालों के पब्लिकेशंस पे, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पे। फॉर एग्जांपल किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हमने अगर फाइंड करना 2019 के लिए तो मैं 2009 लेट्स सी 2017 के अंदर टोटल पब्लिकेशन 10 हुई हैं और उनके साइटेशन जो है उनकी 50 है, और 2018 के अंदर टोटल पब्लिकेशन जो है वो 25 है और उनकी साइटेशन 60 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 दिस इज इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दैट
पर्टिकुलर जर्नल जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसका हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर निकला है 3.1। टोटल नंबर ऑफ जर्नल जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वो 15,201। नंबर वन पे जो जर्नल है इसका इम्पैक्ट 292.3 इम्पैक्ट फैक्टर, विच इज़ वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर। यहाँ पे देखें, अगर कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 0 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो लिस्ट जिसमें जो हमारे फील्ड से पर्टिकुलरली हमारे फील्ड से रिलेटेड है या रिलेटिविटी से रिलेटेड जर्नल्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने यहाँ पे जो शार्ट लिस्ट किए हैं वो 36 हैं ऑलमोस्ट। या तो इनमें मैंने 2015 से या 2013 से 2019 तक इनके हर साल के अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर जो कैलकुलेट किया जनरल या फिजिक्स ऑफ द डार्क यूनिवर्स की तरफ लेके आता हूँ। तो फिजिक्स ऑफ डार्क यूनिवर्स मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ 2014 के अंदर। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 8.5 है और ये फिर कम हुआ 5.1 5.2 पे, फिर 5.4 है और फिर 6 पॉइंट समथिंग है। और इसी तरह कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा और फ्लक्चुएट कर रहा है। 2020 के अंदर इसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.65 है और रिसेंटली इसका इम्पैक्ट फैक्टर डिक्रीज कर गया है। This is the list of journals. It is very important for the new researchers. Uses of impact factor. Impact factor compares different journals within a certain field. Impact factor often used to evaluate the merit of individual articles and individual researchers. Impact factor is not a perfect tool to measure the quality of articles, but there is nothing better than that of this. It a good technique for scientific evaluations. It is very important topic of my presentations, H index and I10 index. First of all, I am going to discuss the H index. H index was introduced by George Harris in 2015 and I10 index was introduced by Google Scholar in 2011. Both journals were introduced to promote the high quality research work and to evaluate it, so to recognize the researchers and distinguish them from the low quality work researchers. What is H index? H index represents that n papers of researcher have been cited at least h times each. It means that a number of papers equal to number of citations. So we can understand H index through this graphical representations. We take papers along x-axis, horizontal axis, taking citations along vertical sides. At the point where the both green lines here, this is a point. Citations equal to number of papers. This is H index. इस टेबल में अगर हम देखें तो पब्लिकेशंस, क्योंकि हमारी जो साइटेशंस हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटेशंस और नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, या नंबर ऑफ साइटेशंस जो हैं वो इक्वल हों या उससे ज़्यादा हों। नंबर लाइक अगर हम 4 को लेते हैं तो चौथा जो आर्टिकल है हमारा, इसकी साइटेशंस 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा, तो वो तो ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा, इट मीन्स कि इसका एच इंडेक्स 4 हो सकता है। लेकिन अगर हम फिफ्थ को इंक्लूड करें तो फिफ्थ की भी साइटेशंस 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 5। लेकिन अगर हम सेवन्थ पेपर को इंक्लूड करें तो 7 की 7 या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो 8 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 7 भी इम्पैक्ट एच इंडेक्स हो सकता है। जो 8th पेपर है उसकी साइटेशंस 5 होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है एच इंडेक्स नहीं हो सकता। टेबल में जो कैलकुलेशंस गिवन है इसमें हमारे पास जो डाटा है उसकी एच इंडेक्स जो है वो 7 है। Characteristics of H index. H index increases over time. Number 2, H index is based on citations count. Number 3, linear relations between value of H index and time. Advantages of H index. H index is a single indicator provides the area of scientific productivity. Number 2, H index does not depends on the total number of citations. Number 3, H index can easily be obtained from WS and Scopus. Disadvantage of H index. H index is size independent. That means two scientists H index has the same value, but their performance could not be same. Now I am going to discuss the I10 index. I10 index means the number of publications with at least 10 citations.
Advantages of I10 index. I10 index is very simple and straightforward to calculate. This measure is only used by Google Scholar because it is invented by Google Scholar in 2011, so it's used by the Google Scholar only. Here I am draw the comparison between I10 index and H index. अगर हम देखें तो 7 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज़्यादा है, मीन्स 7 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स इसका I10 इंडेक्स जो है 7 है। और 8 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी साइटेशंस 8 या 8 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइटेशंस और नंबर ऑफ पेपर्स इक्वल हों या साइटेशंस नंबर ऑफ पेपर्स के इक्वल या उससे ज़्यादा हो, तो जिस नंबर पे वो इक्वल या उससे ज़्यादा होती हैं साइटेशंस, वो नंबर एच इंडेक्स बन जाता है। दैट मीन्स 8 इसका एच इंडेक्स होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दूँ, 9 को हम शामिल करते हैं तो 9 की नंबर ऑफ साइटेशंस या तो 9 होनी चाहिए थी या 9 से ज़्यादा, तो यहाँ पे इसकी 5 साइटेशंस हैं, दैट मीन्स ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। आप जिस भी स्कॉलर का नाम जिस भी स्कॉलर का नाम स्कॉलर्स का इंडेक्स I10 इंडेक्स जानना चाहते हैं, तो आप उसको अपना नाम क्लिक कर आप उसका नाम जाके गूगल पे लिखें और वो आपके पास गूगल पे उसका नाम लिखें और सामने गूगल स्कॉलर लिखते हैं, तो आपके पास यानी डॉक्टर मोहम्मद सईमुल हक भट्टी का एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स देखना है। एम सईमुल हक भट्टी गूगल स्कॉलर लिखूंगा और मैं उसको सर्च करूंगा तो मेरे सामने ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर ज़ैनुल भट्टी इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। इनका एच इंडेक्स जो 28 है, इसका मतलब इनके 28 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनकी साइटेशंस 28 या 28 से ज़्यादा है। हम यहाँ पे इसकी लिस्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारे पेपर्स आ गए इनके, और इनकी साइटेशन जो है वो काउंट की जा सकती है। फाइल ओपन करना चाहूँ तो मैं डॉक्टर जीशान मैं लिखूँगा जीशान जी यूसुफ गूगल स्कॉलर, तो हमारे मेरे पास ये शो हो जाएगा, उनकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। डॉक्टर जीशान यूसुफ also a great young scientist in the field of cosmology and general relativity, और एच इंडेक्स ऑफ डॉक्टर जीशान यूसुफ इज 34। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो 30 साइटेशंस हैं वो 34 से ज़्यादा है, 34 या 34 से ज़्यादा है। इनका I10 इंडेक्स इज 65। इसका मतलब ये हुआ कि इनके 65 आर्टिकल ऐसे हैं जिनकी साइटेशन 10 या 10 से ज़्यादा है। At the end of my presentation, I will show you the great scientist of Pakistan and distinguished professor. The profile of Professor Dr. Muhammad Sharif. His total number of citation 9,382, and his H index is 45. Mashallah, which is very high. And I10 index is 265. It means that 265 articles which having the citations 10 or more than 10, which is very good. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.